Good morning, students. Today we will do the introduction of exercise 2.4. In this exercise, we will discuss the factorization of polynomials. But first, you should know about what is factorization. Factorization क्या होता है बच्चों? अभी तक आपने factorization किया है whole numbers का, but polynomials का नहीं किया है. But in 8th class, you have done factorization of polynomials also. Here we will see an advanced form of this. Okay. होल नंबर्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आप? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल 8 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 4 इंटू 2. आपको कैसे पता कि 4 और 2 इसके फैक्टर्स हैं? क्योंकि जब आप 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट रिमाइंडर 0, एंड जब आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा. दैट मीन्स अगर आप किसी नंबर को उसके फैक्टर्स से डिवाइड करते हैं then it should divide it completely, that is remainder must be 0, then it will be the factors of that number. Now we will discuss the factorization of polynomials. Okay, we can do factorization of polynomials by two methods. First is by splitting the middle term and second is by factor theorem. बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इस मेथड से आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही फैक्टराइज कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू कैन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, बट you can't factorize higher order polynomials by this method. For that you can use the factor theorem. Okay, we will discuss both these methods separately. First we will discuss the method by splitting the middle term. I have already told you that this method is used to factorize the quadratic equations ax square plus bx plus C, and condition is a should not be equals to 0. Okay, this equation will have two factors. Why two factors? Because highest degree is 2. If you have a cubic polynomial, that is ax cube plus bx square plus cx plus d, then for this equation you will have number of factors 3. Okay, you can note down something. One note is there. Number of factors is equals to highest degree of polynomial. Okay, जो डिग्री हाईएस्ट होगी पॉलिनोमियल की उतने ही उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे. लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, यू हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, नाउ यू हैव टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन बाय मिड टर्म स्प्लिट मेथड. ओके, आपको जो ये मिडिल टर्म है दैट इज बी एक्स, उसको स्प्लिट करना है. हाउ विल यू स्प्लिट दैट? फर्स्ट यू विल हैव टू सी ए इंटू सी. ओके, जब आप ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट सम नंबर, देन दैट शुड बी इक्वल्स टू आर एंड एस. यू कैन टेक टू नंबर्स. आई हैव टेकन आर एंड एस. ओके, दैट आर एंड एस, दैट इज आर प्लस एस मस्ट बी इक्वल्स टू बी एंड आर इंटू एस मस्ट बी इक्वल्स टू ए इंटू सी. We will discuss this by taking an example. Okay, let's take an example 6x square plus 17x plus 5. Okay, now here a is equals to 6, b is equals to 17 and c is equals to 5. A into c is equals to 6 into 5 is equals to 30. Okay,
नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, आपको ये मिल गया 30। अब आपको दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका एडिशन 17 हो। इफ़ यू ऐड 6 and 5 you will get 11, that is not equals to 17, so you can't take this combination. Okay, let's see another example. 3 into 10 is equals to 30 and 3 plus 10 is equals to 13. This is not also equals to 17. Let's take another example. 2 into 15 is equals to 30 and 2 plus 15 is equals to 17. Okay, now you can take this combination. So what we can write here, 6x square plus 2x plus 15x plus 5. 2x plus 15x is equals to 17x. So there's no harm in writing here. Okay, now what will you do? You will take common from these two terms. 2x, आपके पास अब क्या बच गया यहाँ पे 3x plus 1. अगेन आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे. वी विल टेक 5 कॉमन. अंदर क्या बच गया 3x plus 1. अब आप इस पूरी टर्म में से कॉमन लेंगे 3x plus 1, तो आपके पास क्या बच गया 2x plus 5. ओके, सो आप देख सकते हैं जो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो फैक्टर्स हमें मिल गए 3x plus 1 and 2x plus 5. Now we will do another method that is by factor theorem. Okay, this method is used to factorize the polynomials of the kind x square plus bx plus c, x cube plus bx square plus cx plus d, x4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. One note is there, note that the coefficient of highest degree should be 1. If you have coefficient of the highest degree 1, then only you can use this theorem in finding the factors of these kind of equations. Okay, in this equation you can see coefficient of x square is 1, coefficient of x cube is 1, and coefficient of x की power 4 is also 1. Okay, let's talk about this theorem by taking an example. Okay, let's take an example polynomial py is equals to y square minus 5y plus 6. Okay, you have to factorize this equation by using the factor theorem. First step is step 1. Okay, first you have to check whether the coefficient of highest degree is 1 or not. You have 1. Okay, step 1 is check whether coefficient of highest degree is 1. Done first step. Then what is second step? Step 2 is find the factors of the constant term. Okay, find the factors of constant term. What is constant term is here? That is 6, and factors of 6 are 1, 2 and 3. Now what you have to do is step 3. Now check each factor in above equation. Okay,
what is your equation? What is your polynomial? Py is y square minus 5y plus 6. Okay, and factors of 6 are 1, 2 and 3. You have to check each of these factors in this equation. So p1 is equals to 1 ka square minus 5 into 1 plus 6, that is 1 minus 5 plus 6. This is not equals to 0. Now check p2. 2 square minus 5 into 2 plus 6 is equals to 4 minus 10 plus 6. This is equals to 0. Now check p3. 3 square minus 5 into 3 plus 6. 3 3 is a 9 minus 15 plus 6. This is equals to 15 minus 15 is equals to 0. So you can check that 2 and 3 are the factors of this. You get remainder as 0. But you can't write 2 and 3 as its factor. Okay, and you can see that you have only 2 factors since highest degree is 2. So you write x minus 2 and x minus 3 are the factors of polynomial y square minus 5y plus 6. Okay, this is the factor theorem. Okay, that's all for today's lecture. Thank you, students.